से कुछ दिन हो गए लाइव किए हुए। मैंने कुछ देर पहले ही अपना वीडियो आज रिलीज़ कर दिया था। ठीक है। सो आज का काम अभी तक के लिए ख़त्म है। ठीक है। नाम नाम का ख़त्म है, क्योंकि वो आइडियल कंडीशन कभी आना ही नहीं है कि भाई पूरा काम ख़त्म हो गया, एक काम ख़त्म हुआ दूसरा आ गया, दूसरा उसके बाद तीसरा। वो आइडियल कंडीशन लाइफ में आना ही नहीं वाला कभी। ठीक है। रात के 12 बज रहे हैं अभी। सो प्रॉब्लम इज टाइम नहीं मिल रहा था लाइव आने का। ये फेस में अभी हो रहा है ऐसा कुछ, यहाँ यहाँ यहाँ। सुमित, टॉप मारोगे क्या? कितना पढ़ोगे? चिल मान लो, चिल। और कितना पढ़ोगे? पागल हो जाओगे भाई। ठीक है। वो कल ही मैं क्या? हाँ भाई, वो कल ही ना मैं दिया था यार। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन अगेन। एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ, तो बात ये है कि वो आइडल कंडीशन कभी मीट होने ही नहीं वाला कि एक दिन आया कि हर काम खत्म हो गया। आइडल कंडीशन कभी आने ही नहीं वाला कि भाई सब खत्म हो गया काम, और काम में ही फिर से भाई लाइव में भी नहीं रनिंग चाहिए क्या? भाई लाइव में भी नहीं रनिंग चाहिए। भाई बोलना क्या चाहते हो? भाई लाइव में भी रुकनी नहीं चाहिए। लाइव रुकनी नहीं चाहिए, सही बोल रहा हूँ मैं? थम्स अप दिखा दो। लाइव तो वैसे भी नहीं रुकेगी, थोड़ा सा बात करने के बाद रुकेगा। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था कि ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है। तो अगर हम हाँ, तो अगर हमें कुछ करना भी होगा ना, तो जो करना होगा इसके अंदर ही करना होगा। सबसे बड़ा टाइम वेस्ट एक ही चीज़ में होता है। सबसे बड़ा, हाँ, बोल सकते हैं सबसे बड़ा टाइम वेस्ट होता है हम लोगों का गेम खेलने में। इससे बड़ा टाइम वेस्ट ना और किसी में नहीं हो सकता। अगर हम कोई ढंग का वेब सीरीज भी देख लेना, अगर ढंग का वेब सीरीज या फिर मूवी भी देख ले, उससे थोड़ा अगर कुछ भी सीखने को मिले तो गेम से तो कुछ मिलेगा ही नहीं। बात यह है। और गेम ये एक ऐसा चीज़ है ना, जो कान को पकड़ के थप्पड़ मार के वहीं बिठा देगा। तुम्हें लगेगा, तुम चाहोगे अंदर से कि मैं नहीं खेलूं, उतना ही ज़्यादा तुम उसको खेलना चाहोगे। और अगर ऐसा कोई गेम हो जो तुम्हारे डीपेस्ट लेवल को अगर सेटिस्फाई कर रहा हो ना, तो उस गेम को छोड़ने में ना तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। अगर गेम को डिलीट करोगे तो पढ़ाई में मन नहीं रहेगा। मेरे साथ भी ऐसा है। मेरे पास भी एक ऐसा ही गेम है। हाँ हाँ भाई, हाँ, एकदम डोपामिन हिट। और डोपामिन हिट मतलब छोटा मोटा नहीं। एक इंसान के अंदर जो सबसे बड़ा डर रहता है वो है प्रेजेंट टाइम का। ठीक है। सबसे बड़ा डर इसी प्रेजेंट टाइम का रहता है कि कितने सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। ठीक है। और इससे एस्केप करने के लिए लोग सारे गेम खेलते हैं, इसी चीज़ से एस्केप करने के लिए कि लाइफ इतना हार्ड है, गेम इतना अच्छा लग रहा है तो गेम ही खेल लेते हैं।
बट द रियलिटी इज, अगर तुम वो गेम खेलोगे ना और तुम अपने प्रॉब्लम्स को डिले करते रहोगे, तो वो प्रॉब्लम्स तो पहली बात निपटेंगे नहीं, वो प्रोक्रेस्टिनेट होते चले जाएंगे, ठीक है। अगर तुम सोचो महीने में एक बार गेम खेल लो, क्या सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इज लाइक अट्रैक्शन। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इज लाइक अट्रैक्शन अदर देन गेम्स, नो। अट्रैक्शन इज नेचुरल प्रोसेस ना, वो तो होना ही है। मतलब अगर तुम्हारे अंदर इमोशन जिंदा है तो वो अट्रैक्शन तो होगा ही ना। लेकिन ये जो गेम वाला सिस्टम है ये तो पहले नहीं था, लेकिन अट्रैक्शन का सिस्टम बहुत पहले से चल रहा था, ठीक है। ये गेम वाला तो वो आर्टिफिशियल वाला चीज़ है ना, समझ रहे हो। मीन्स एक्टिंग, हाँ मैं समझ रहा हूँ, वो डिस्ट्रैक्शन है। बट सबसे बड़ा वाला मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा वाला। सुनो ना, मैं सबसे बड़ा वाला, हाँ। तो मैं जो बोल रहा था कि, और हाँ, तो जो लाइफ को एस्केप करने के बाद जो गेम में सुकून मिलता है ना, कितना देर, 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मैं तो नहीं खेल पाता, और बाकी का मैं नहीं जानता। 3 घंटे के बाद जब तुम वहाँ उस कंप्यूटर से उठोगे ना, कि चलो भाई बहुत गेम खेल लिया, इतना सेटिस्फाई हो गए, इतना अच्छा लग रहा है, उसके बाद जब तुम वो कंप्यूटर से उठोगे, रात में जब नींद लेते जाओगे ना, तब वो इतना रिग्रेट वाला होगा। सम खुद को नहीं समझा पाओगे तुम। क्या जाके रोल, क्या लिख रहे हो भाई। हाँ, तो बोल रहा तो कि मतलब तुम खुद को ही ना इतना कोसोगे, मतलब इतना रिग्रेट रहेगा ना खुद के एक्शंस के अंदर, कि कैसे हम अपने लाइफ को हाथ में घोट के मार रहे हैं। जब वो रियलाइजेशन होता है ना, तभी से लाइफ चेंज होता है। और जब तक तुम इस चीज़ को समझने में देरी कर देते हो कि जो मज़ा ना रियल लाइफ में लेना होगा, प्रेजेंट टाइम से निकालना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि गेम खेलने बैठ जाओ, मतलब ये है कि लाइफ को इतना मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बना दो कि लाइफ से बाहर जाने का इच्छा ना हो। और गेम्स वही लोग खेलेंगे कि जिसको ना लिए रियल लाइफ में एकदम कुछ मज़ा नहीं है, वही लोग गेम्स खेलेंगे। और तुम लोगों के जो लोग गेम्स ऐसे खेलते हैं, मैं भी इंक्लूडेड हूँ, आई एम एक्सेप्टिंग इट। क्या बोल रहे हो, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि लास्ट, अरे भाई कौन तुम्हें रोक के बैठा है यहाँ। बैकलॉग कवर करो, मेरा भी बैकलॉग हो रहा है। मैं तो सब अपने थॉट्स को शेयर कर रहा हूँ ताकि और लोग इसको उभर के पाए, उभर के आ जाए। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ऐसे करके ना लाइफ में जो डिफ़िकल्टी है ना बढ़ते जा रहा है। और एक बड़ा मेजर चीज़ हो रहा है कि जो हमारा दुनिया का स्पीड है ना, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, हम यूथ उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम लोग दौड़ते दौड़ते वहीं उसी रेस पे गिर जा रहे हैं। ऐसा हो कि लाइफ का, अगर ये एडवांसमेंट का अगर स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाए ना, बहुत अच्छा होगा। हम वो एडवांसमेंट को सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जिस स्पीड पे एआई एआई या फिर ये वो करते जा रहा है ना, हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्या हो रहा है अल्टीमेटली, हम लोग ना एक दौड़ दौड़ ही रहे हैं। और इस ये जो रेस में दौड़ रहा है ना, ये सस्टेन करना बहुत बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मैराथन में अगर तुम बहुत स्पीड में पहले दौड़ लोगे ना, तो मैराथन ख़त्म होने से पहले ही ना तुम बैठ जाओगे, कि हाँफते हुए तुम बैठ जाओगे कि मैं मैराथन नहीं जीत पाऊंगा। और एडवांसमेंट का अभी वही टाइम हो रहा है। ह्यूमन माइंड का जो चेंज होने का जो टाइम है ना, उससे बहुत गुना बढ़ चुका है एडवांसमेंट का स्पीड, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज, एडवांसमेंट अगर थोड़ा सा स्लो हो जाए तो ह्यूमन माइंड उसको समझ पाए। और ऐसा तो नहीं कि हम लोग सिर्फ रोबोट्स है जो एडवांसमेंट्स के ऊपर से फोकस करेंगे,
कि एआई में क्या हो रहा है, उसको सीख ले, पढ़ाई में सीख ले, लाइफ में ये कर ले, वो कर ले। हमारा सोशल लाइफ ऐसे करके ना बिगड़ते जा रहा है, क्योंकि सोशल लाइफ में भी कुछ चीज़ होता है कि थोड़ा सा बैठ के बात करना किसी से, किसी के साथ। अभी अगर हेलो, वन सेकेंड प्लीज। तो थोड़ा अर्जेंट कॉल हो गया था, सॉरी। तो मैं जो बोल रहा था कि अगर इस एडवांसमेंट ये जो हो रहा है ना, ये हमारे लिए तो ठीक हो ही नहीं रहा। ये जो स्पीड में हम लोग दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम कर नहीं पाएंगे, ये चलेगा नहीं, देख लेना। अल्टीमेटली ना ये एक ऐसी जगह तक जा रहा है जो बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत खतरनाक। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा एडवांसमेंट रोक दो, बट हाँ, इतना मत करो कि लोग उसको पकड़ ही ना पाए। अभी तो देख ही रहे हो एआई का क्या ज़माना आ रहा है, आ गया, सॉरी, आ नहीं रहा। ये जो सारे फोटोज जो लोग आगे फोटोग्राफर्स खींचते थे, वो एआई खा गया। उसके बाद जो अभी वीडियोस आते थे ना, अब वो बहुत अच्छे से बना पा रहा है गूगल Veo 3। खत्म, वीडियोस भी अब एआई बनाने लगा है। एक सेकंड, बिकॉज थिंग्स गोना बी दो, बट वी नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, टेक challenges. Yes, we need to trust the process. I am not telling that we will just deny the fact that the process is not fair. I am just telling that the challenges which is getting day by day now, they are getting much harder than our actual capacity to tolerate the challenges. The main problem is that, okay, our tolerance, which has been for the previous 10,000 years, the tolerance has not increased yet much. Okay, so to increase the tolerance we need much more time, so that we can cope up with the advancements which are happening. Just see, just ask the youth how many AI tools they know, that about which works needs to be done about with which AI tool. Okay, that is the main problem. Only ChatGPT is not the case, and only we hardly know 4 to 5 AI tools, but there are more than 50 AI tools. According to the number, I don't know the actual number, but there are many of them. Okay, many in the market for the specific jobs, which I and the top professionals only knows that which AI tool must be used for which task. Okay, the only way is just self exploration. I am not telling that. Even though if you want to self exploration, na, then first you need to be financially free. Otherwise, how can you do self exploration if your stomach is empty, just shouting for food? Then no, it will be of no thing. AI can't replace humans, but we need AI is cannot replace humans, but AI can replace the human jobs through which humans are just buy their food. Okay, the minimum requirement of humans, they the job that is being taken place by AI. Okay, see, the AI is not being fully fledged yet, but the speed at which is it is occurring, the tolerance of which of the human mind, the tolerance, the the breakthrough is going to happen very fast. The tolerance point has about to meet just about to meet the tolerance level, the capacity to retain everything. Okay, so that we can learn the thing. The capacity is going down day by day, because the resources is so much, the resources is so much. Chat GPT 5 has came recently. Okay, and then 6, 7, 8, and the advancements, my goodness, you will just see, and your jaw will be on the ground. The advancements will be like this. We can compete with it is isolation from social media.
You're getting in the wrong direction, Sumit. See, isolation is a whole different thing. Okay, the whole system is running on internet now. If you isolate from internet even from one day, everything will be at risk. You cannot do any kind of payments and anything. You cannot take the world news, and everything will be at a risk. See, suppose if something is going to happen and you know it only by news. Okay, isolation is not the solution. We need a middle path. Okay, where humans needs to recognize that the scientists who are discovering this kind of models, their roles is also going to be at risk. Okay, the problem is this: we just need much more time to cope up with this AI advancements. How many of you know that about 50 AI tools and for the specific purpose for which it is needed? How many of you know? Yeah, I know AI is just a shitty gateway where people go. See, AI, yes, people go just to be lazy. I know that, but it is increasing the efficiency of work that which is being done by five people. Okay, now AI can do it easily. That's why the computer project, a maximum school, the computer project which we get for the coding purpose, we maximum do it through ChatGPT 5. The least number of codes which you even can't think of, ChatGPT can give it. Okay, I believe hard work in the process. I'm not telling that. I know that hard work is a key, but the thing is, we need information to such a level so that it can be sustained to everyone. Okay, hard work is the key from where the earth has just taken life. Okay, because from that day only, if you don't do hard work, you won't survive only. That's the main point. Hard work was the key from 10,000 years ago, but now the situation is changing. Now the hard work is now shifting to much smart work and luck. Okay, if you have the knowledge and luck, you will get into that. Otherwise, it is going to be very much problematic for us, the youth. Okay, the main problem is this. And as a youth, if we don't raise voice, means if we don't get the, if we don't do the revolution here now, then who will do it for us? Who will do it? No one. We ourselves have to understand what is the main problem, how to fight with it. There are many products in the market. Okay, who, which does not tell us only that which problem they are solving. Suppose Blinkit is solving urgency of products, Amazon is solving delivery of products. Okay, marketplace. But the thing is, suppose if I take the example of Apple, that Vision Pro, what problem it is solving? What problem? They're creating the own problem, and then they're solving it only. They're solving the problem of isolation. First, they have created the social media to connect people, which are isolating people, not connecting. Okay, and then for the isolation only, they are giving us the solution of Apple Vision Pro. Just think about a race where the race stand behind each other, and the real race is the person who is standing at the last, but he compete with all of them and come first. See, you are going into the philosophical version. I'm not going into the philosophical version now. That is a whole different story. I'm just talking about the practical reality of the AI which is occurring in this world. Okay, most of us know which AI jobs is going to boom, but not really learning it, because the speed of the speed has gone too much high to just recognize that okay, AI has come into our lives and now we have to integrate it. It has gone too much faster, too much. Okay, the main problem is this:
because AI is a very recent giant which is eating the whole world now. The giant is very recent but very huge, and this giant can only be stopped by them who are creating this monster. So it's not like AI or some other shit is making is stand in the race to the last moment. You're getting in the wrong direction, Sumit. My point is only that the learning curve of humans, okay, from the last 10,000 years has not grown so much, okay. I know that it's all about the will. The learning curve of humans has not grown so much from the past 10,000 years. It is not said by me, it is done by the research of Stanford University, okay. It is their research papers saying, okay. So the main thing is this. So to cope up with this AI na, we just need much more time, and no mo- and the fact is not will. If you have the greatest will in the earth na, but you are having a huge bunch of AI to learn of, I am damn sure this will can only be there for the next 4 to 5 years for the maximum if you are a very powerful and spiritual person. But after that, this will is also going to break off. No one is going to save you. Okay, we want a tendency to just to be relaxed. Yes, I know that, but the thing is, we see if the things are going too high na, if people are understanding that we can't just cope up with it, then people will only try to relax because everything is getting out of their hand from the first place only. So they have nothing to take in their hands. The control is out of their hands now. So that's why they're relaxing. But if they see that the things are in control till now as well, if the AI I can learn everything till now as well, then it will be not so much problematic. Like someone will come and put a spoonful of. But the thing is, if you don't have the eating capacity, no matter if you have 100 spoons in front of your mouth, you will not be able to consume them. You must need to have the capacity of 100 people first, then you can eat the food of that capacity. My main problem is that only, not my problem. It is our generation's problem that the you are just the example you have given that the spoonful of food, okay, around, suppose they are in front of your mouth, okay, and if 100 spoons are in front of your mouth and if one person is able to consume only one spoon, okay, so and you are being told to consume the other 100 with your willpower, you won't be able to do that no matter how much willpower you have. And by the time you consume whole the 100 spoons, you will see another 200 spoons have been served in your table. How much will you eat, huh? What is the capacity? So what that I'm trying to tell, hardworking beating our dopamine every day. That is a different factor, Sumit. Yes, I'm just agreeing with you that dopamine needs to be just extracted from the real life things, not this virtual reality, not these games that which behind which we are running, not these games. I'm accepting it, but the thing is, if everything gets out of the hand, okay, suppose things go so much high that even you and even me and the other generation realizes that we won't be able to cope up with it anyway, okay, then rather than just doing this tension or stress, we will be only relaxing at that point of time. Otherwise, no other way of escaping that na, because the things will be going too much high. Okay, the main problem is this: the advancement has been so high. If you go 2 years past na, if you take a person from there to and do the time travel to this specific day, he will be shocked to know that how much fast
The development has been going on from the previous 3 years. Okay, so okay, so that is the thing being. And the main problem is this. Okay, we just need more time to consume these things so that it can come under control of every human, means the maximum number of humans, so that they can be in control of what they can consume. Okay, because the speed is going much high. Okay, the socializing time is is left with no people. If you call any people who are having a job, he will only say one thing, that I am right now busy, I will talk later, and now he will cut the call, and never he will call back. Just the Badash, who can beat us? Just be the just sorry for cutting it. Just the Varas who can beat their own emotions. Sumit, I definitely agree with you. Okay, I definitely agree with you. But the thing I am trying to convey you, that everything is getting overwhelmed. This over factor is getting us too much problematic. Okay, I'm just telling you this. Okay, my main point for this live stream, that things needs to be slowed down. Otherwise, everything is getting out of the hands. We can do nothing at the if we just progress like this, and one point of time will come, that at that point of time we will realize that nothing can be done more. Everything is out of control now, just finished. And at that point of time, at the point of time which I am talking about, this will be the point of time where there will be nothing like middle class. Either you will be rich, and rich will get rich day by day more, either you will be a rich, otherwise you will be a poor. The point of time which I am talking about, there will be nothing like you are a middle class person. Every middle class families will be wiped out by that time. Okay, the main problem is this. I'm just asking for the time so that we humans can cope up with this. Okay, okay. So my main message for today is this. So bye. I have also go to bed now. Good night. I hope for a better future for our generation and for the upcoming generations as well. Good night.